अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। आज हम जिस अपने लेसन को टेकअप करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास ऐसे जुमले आएंगे जिसमें आप अपना तारुफ़ करवा सकते हैं, दूसरे के बारे में जान सकते हैं और ये बिल्कुल एक मुकम्मल आपकी तैयारी हो रही है, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अंग्रेज़ी बोलना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। आइए ज़रा तवज्जो फरमाइए। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश इन 10 लाइन्स। ये काफ़ी अच्छा है। तो हेलो, इट्स नाइस टू मीट यू। क्या हाल है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हेलो एंड नाइस टू मीट यू इन इंग्लिश आर मस्ट नो फ्रेजेस, क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं वो सलाम करने का उनका अंदाज़ ऐसे है, वो ज़रूर कहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई। एंड एनी इंट्रोडक्शन विल प्रॉब्ली स्टार्ट विद दीज वर्ड्स। और उनके यहाँ ये दो जुमले बड़े अहम हैं, उनकी ज़ुबान में ये आप याद कर लें। हेलो कैसे हैं, और इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। You can also listen to this free English class 101 audio lesson. Press play. You will learn how to introduce yourself in business meetings. My name is Harry, Adeel, Ali. This is simple. Just take the phrase above and add your name. यहाँ सिर्फ अपना नाम लगा दो। My name is Joanne. My name is Ali. My name is Maria. My name is Shen. My name is Bob. My name is Anna. I am from, say where are you from? I am from Lahore, I am from Islamabad, America, Europe, Africa, Asia. Just stick the name of your country inside this phrase. This means what country were you born in. तो अगर आप किसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में हैं तो आप जाहिर है कि अपना कहेंगे I am from Pakistan where I was born. I am from Pakistan, I am from China, I am from India, I am from Malaysia, I am from South Korea, I am from Russia, I am from Mexico. I live in. So where do you live now? Just fill in the blank with the country or the city if famous into this. तो जहाँ पे आप कह सकते हो I live in Lahore. Lahore is also a very famous historical city in the world. Everybody knows about it. अब आ गया यहाँ से इस तरफ आ जाइए। I live in Pakistan, India, France, Brazil, China, Taiwan. I live in Japan. I have been learning English dash. How long have you been learning? For a month, for a year. यहाँ पे आप बताएंगे आपको अंग्रेज़ी सीखते हुए कितना अरसा हो गया है। I have been learning English for 1 year. I have been learning English for a couple of years, for 2 years, for 2 months. I have been learning English for 20 days, for 30 days. I have been learning English for 5 weeks. I am learning English at. At means मैं कहाँ सीख रहा हूँ? At home. This would be a greater line. Know and use your introduction. It may change to in or other prepositions. It may get removed. Are my examples. वो कह रहा है यानी कि आपने स्कूल में सीखा, ऑनलाइन सीखा, कहाँ सीखा, वो बताना है यहाँ पे। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश एट स्कूल, मैं स्कूल में सीख रहा हूँ अंग्रेज़ी बोलना। आई एम लर्निंग इंग्लिश एट होम, मैं घर पे ही तरबियत कर रहा हूँ अपनी। आई एम लर्निंग इंग्लिश इन क्लास, मैंने क्लास ज्वाइन की है। आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश विद अ फ्रेंड, आई एम लर्निंग इंग्लिश विद अ टीचर, मैं एक टीचर के साथ अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आसान सवाल है, इधर आपने उम्र अपनी ऐड करनी है। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। और आई एम, उसके बाद आपने ये लगाना है आपकी पोजीशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। ये क्वेश्चन भी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत आम होता है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ प्रोग्रामर, आई एम अ डेंटिस्ट, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, I am an office worker. I am an English teacher. One of my hobbies is, इधर आप अपनी hobbies का जिक्र कर दिए जो भी आप करते हैं। One of my hobbies is sleeping. One of my hobbies is learning English. One of my hobbies is going out with friends, hang out. One of my hobbies is watching movies. मैं फिल्म देखता हूँ। One of my hobbies is going to restaurants. मैं किसी रेस्तोरां में जाता हूँ। वन ऑफ माई हॉबीज़ इज़ कुकिंग, और मेरी हॉबी खाना पकाना है। आई एन्जॉय टू लिसनिंग म्यूज़िक। व्हाट डू यू एन्जॉय और लाइक? आप तो किस चीज़ से खुश होते हो? पहली मरतबा जैसे उनके यहाँ डेटिंग कल्चर है। आई एन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक।
मुझे मौसीकी सुनना पसंद है। आई एन्जॉय ईटिंग, मुझे खाना खाना पसंद है। आई एन्जॉय वॉचिंग टेलीविज़न, मुझे टेलीविज़न पसंद है। आई एन्जॉय लर्निंग लैंग्वेजेस, अमेजिंग, मुझे नई ज़ुबानें सीखने का शौक़ है, ज़ुबानें सीखना। आई एन्जॉय एक्सरसाइजिंग, मुझे वर्जिश करना पसंद है। आई एन्जॉय रिसाइटिंग कुरान, वल्लाह इट्स अमेजिंग, मुझे कुरान पाक की तिलावत करना पसंद है। सुभान अल्लाह। डू यू हैव चिल्ड्रन? बल्कि यहीं पर हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं और अगला लेसन हम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि जितना ये हमने पढ़ा है इसको दोहराइएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।